बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग काइट्स। एक गिवन काइट है हमारे पास, इसके अननोन्स हमने निकालने हैं। द अननोन्स आर एंगल ए एंड एंगल बी आर द अननोन्स। अब हमें काइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए। काइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे पास गिवन फिगर काइट है। काइट में जो एक प्रॉपर्टी हमारे पास गिवन है, द ऑपोजिट साइड्स में भी पैरेलल। काइट में ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं और ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये है। तो जब भी दो पैरेलल साइड्स हैं, तो अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। इट मीन्स दैट इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ़ इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट मीन्स दैट द एंगल opposite to this side, this angle, and the angle opposite to this side is this angle. This angle must be equal to this angle in this triangle, is in triangle ADC. This angle must be equal to this angle, as these two sides are equal. Similarly, as these two sides are equal in kite, it means that the angle opposite to this and the angle opposite to this must be equal. It means that in this triangle, this angle must be equal to this angle. So another property is that there are two pair of equal adjacent sides. This is a similar, or this property is that one which we have discussed. And next, there is another property, diagonals cut each other at right angles. This diagonal and this diagonal, these two diagonals cut each other by 90 degree. There is another property, one diagonal bisect interior angle. Means that the this diagonal bisect this angle D, this complete angle. This diagonal will bisect this complete angle D. Means that the angle ADB means that this angle must be equal to CDB. CDB means that this angle must be equal to this angle as we have drawn the diagonal. So जब भी आप डायगोनल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे। मीन्स दैट डायगोनल इस कंप्लीट एंगल को दो इक्वल एंगल्स में बाइसेक्ट कर देगा। सिमिलरली ये डायगोनल इस कंप्लीट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स दैट दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे यूटिलाइज करनी है। सो इन दिस क्वेश्चन, in this kite, as we know that in kite this side must be equal to this side and this side is equal to this side. So we are considering the triangle ADC. We are considering the triangle ADC. In triangle ADC, this triangle is isosceles triangle. It means that the angle opposite to this side and the angle opposite to this side is same. It means that as it is a degree, so it is also a degree. So as in this triangle, the sum of all angle is equal to 180 degree. So 100 degree plus a degree plus a degree is equal to 180 degree. 100 डिग्री प्लस ए डिग्री प्लस ए डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी ए डिग्री होगा क्योंकि हमारे पास ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। ये दोनों सेम साइड्स हैं। सेम साइड्स के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ये ए डिग्री है तो ये भी ए डिग्री होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। 2a डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड a मस्ट बी इक्वल टू 40. द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 40 डिग्री. The second unknown, to find the second unknown, we will consider the triangle ABC. In this triangle, these two sides are equal. It means the angle opposite to this side is equal to the angle opposite to this side. Means that this is 61 degree, so this is also 61 degree. So in this triangle, the sum of 1, 2 and 3 angle is equal to 180 degree. So B degree plus 61 degree plus 61 degree is equals to 180 degree. So B degree is plus 122 is equals to 180 degree. So B is equals to 180 minus 122. So 180 minus 122 is 58 degree. So B is equals to 58 degree. So this is the part A. In part B we have another kite. We have to find the C
To find C, we will consider the triangle ADC. In triangle ADC, we have studied the property of the kite is that the diagonal will bisect these two angles, means that this diagonal is bisecting this complete angle. So it means that if it is 40 degrees, so it must be equal to 40 degree. If it is 26 degrees, so this must be 26 degree. So in this triangle, as it is 40 degrees, so it must be equal to 40 degree, because diagonal always bisect the angles in kite. So it means that in triangle ABC, the sum of all angles is equal to 180 degree. It means that 40 degree plus C degree plus 26 degree makes 180 degree. So C will be equal to 180 minus sum of 40 and 26. The sum of 40 and 26 is 66. So C will be equal to 114 degree. So this is the question number 3 with 2 parts. We have done with it. Inshallah, in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.